before I let you go, I have Sure. like some small questions Sure. which are very light-hearted, Sure. which is not Yeah. heavy-headed like Let's gloomy do and it. everything, right? So, first thing which I want to know is like, do you prefer your TV is wall-mounted or on the table? I'm a tabletop guy. I'll tell you why. Mm-hmm. I test a lot of TVs at home. If I wall mount my TV, nikalna karna, it's a problem. But yeah, mostly if you look at numbers, it's almost 50-50. I think people do. There is equal split of both people wall mounting. I think the larger size you go, people prefer it to be wall mounted. Smaller TV sizes are more on the tabletop side. But I'm a tabletop guy. I have another reason for it. The sound in speakers in all the TVs are actually down facing. So if you actually tabletop it, it can bounce and you can hear it very well. That's my reason of tabletopping. मेरा सिर्फ सिंपल रीजन है कि भाई दीवार खराब नहीं करना है भाई. That's also genuine reason. A lot of people might not have their own home, so they don't want to touch it. Correct. So Like if you're in a rented premises, like Yeah. landlord will Correct. cause a lot of problems. Second thing which I wanted to know, do you scroll your phone while watching TV? Like, are you like peripheral vision? आप TV आप देख नहीं सुन रहे हो basically. डिपेंड करता है कौन सा कंटेंट चल रहा है. अगर एक इंटेंस शो है, आई थिंक वन ऑफ द रीसेंट शो दैट आई वॉच्ड वाज एडोलेसेंस ऑन नेटफ्लिक्स. काफ़ी इंटेंस है. इट्स अ शॉर्ट 4 एपिसोड, ब्यूटिफुली शॉर्ट. बट shows like that, I think उसके लिए you are like always watching. But more often than not, I think my wife, she always watches content. कंटेंट चल रहा है, वो कंप्यूटर पे काम कर रही है या फिर फोन पे So it's she's like very working. peripheral. हाँ, वो बैकग्राउंड Background लाइक नॉइज की तरह चल रहा है. So if you had to give a name to your character name to your TV, what would it be? My character name, wow, I'll have to think. If there is one character that really fits aptly to my TV, the TVs that we have built, is the Flash. Flash. The Flash. Fast. Nice. Like I would name it Turtle because it just keeps loading. Slow speed. Not my speed. TV. What era of TVs do you think were the best? Like, do you like the flat screens or do you miss the old CRT बड़े speakers वाले TVs? Or the ones with remote. My first TV was a black and white. So it used to like close the door. वो wooden वाला होता था, वो खुलता था. और 9 या 12 knobs होते थे. Those are the only channels that used to come. और उस टाइम पे तो एंटीना ऊपर से वो भाई बोल रहा है, आ रहा है क्या, वो डिफरेंट एंगल्स में वो घुमा रहा है, नीचे आ रहा है, हाँ आया वो क्लियर आया. So I'm from that era, quite old. You can see my gray hairs. But I think technology with improvement, again I'm a nerd in TV. Back in the day CRT में क्या होता था, the maximum cap was like 100 nits. सारे content उसी में बनते थे. It is very standardized experience. The only thing that I miss today is contents are not very standardized. In terms of कोई 1000 nits में बना रहा है, कोई 400 nits में बना रहा है. So the experience is not very, like if I were to do it, I would make it very like I would cap things and have every content produced in a certain way. But unfortunately, that's the only thing that I miss. पहले एक consistent experience था. आज के डेट में वो कंटेंट कीप्स वेरिंग. आई डोंट नो इफ यू हैव नोटिस्ड, गेम ऑफ थ्रोन्स देखते हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. भाई वो कौन सा क्रिएटर है यार, वो लाइक डार्क सीन्स गेम ऑफ थ्रोन्स के कुछ सीन्स थे जो एकदम बिल्कुल कुछ नहीं दिखा रहा है. ब्राइटनेस बढ़ाना पड़ रहा है. हां भाई, मेरे टीम में दिखता है वो. यू शुड सी इट. बट दैट्स वन आई थिंक आई वुड से आई मिस द कंसिस्टेंसी. कभी लाइक एज यू मेंशनड आल्सो, लाइक छत पे जाके कभी एंटीनास एडजस्ट किए हैं, वो पैरेलल वायर्स, डू यू रिमेंबर? यस. हैव यू डन इट? यस, आई हैव डन इट. हम लोग कॉलोनी में रहते थे. कभी वायर लगा के केबल कैच कराई? वो तो नहीं किया हम लोग. द ओनली थिंग वाज, या तो केबल जुड़ जाते थे, बिकॉज एवरीथिंग, आप अपार्टमेंट में रह रहे हो, इट्स लाइक इट्स अ कॉलोनी, गवर्नमेंट कॉलोनी. सो वहाँ पर एक ही साइड पे लगाते थे सारे एंटेना, सब ऐसे साइड में होते थे और सब तार एक ही साइड से आ रहे, बिकॉज ऑल द टीवीज आर इन द लिविंग रूम व्हिच इज ऑन वन फेज ऑफ द अपार्टमेंट. तो that has happened. Never had the chance to hook. Yeah, but I know a lot of people used to do it. मेरा सारा OTT कंटेंट उधर ही से आता था बचपन में. लास्ट क्वेश्चन व्हिच आई वांटेड टू आस्क, ये रिमोट को पीछे मारने से चलता क्यों है? हाँ, पहले नहीं चलेगा, लेकिन अगर रिमोट को पीछे ठप मारा तो चलता क्यों है? टेक्निकल रीजन बताओ. बैटरी होता है. बेसिकली when you shake the battery, there is some form of like energy, not exactly the right science, but
that's what basically happens. Older remotes I remember we used to do a lot. Actually वो बैटरी चेंज नहीं करते थे. जैसे हम टूथब्रश frequently चेंज नहीं करते, बैटरी भी लोग चेंज नहीं करते, and they expect another analogy that I can draw, lighter. आप गैस लाइटर चेंज नहीं करते, वो मार मार के ऑन करते रहते हो. So I think remote is kind of falls in that same vicinity. We just don't change, like we don't feel the need necessary, but remote बैटरी चेंज करोगे तो जब मैं छोटा था तो टीवी पे भी ढप मार दो तो रिसेप्शन सही हो जाता था उसका. वो तो एंटीना था ना. आजकल एंटीना, while all the TVs we do has an antenna, but I think Prasar Bharati is moving to digital. So a lot of TVs in future are going to come with digital tuners now, which they're working on. It has not been done, but it'll come very soon. Maybe satellite internet compatibility will be a thing. Yes. All right. Thank you so much for doing this, and it was lovely talking to you. Bye bye.